Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 8 of the class 11 physics. The name of the chapter gravitation. What is the meaning of the gravitation? Including a chapter we defined our two terms. First one is the gravitation and second one is the gravity. Gravitation मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, between the two planet, gravitational force between the two planet, the force, the attraction force between the two planet are known as the gravitational force. Universal gravitational constant defined by capital G and acceleration due to gravity defined by small g. The value of capital G will be equal of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, but the value of small g will be equal of कितना होता है 9.8 and the value of small g will be equal of capital Gm by r square, and the value of capital G will be equal, the value of capital G will be equal of capital F into d square by m into m. Student, in the previous video we seen the different derivation related to small g, related to capital G, related to g and g dash, सब हमने देखा है. आज हम क्या देखेंगे? ठीक है, टुडेज क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्टूडेंट? अगर जो इस मार्कर पेन को इस वेलोसिटी के साथ फेंक दिया जाए कि वो अर्थ में कभी भी रिटर्न ना हो, तो ये जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी. इन द सिंपल लैंग्वेज, जब किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक दिया जाए कि ग्रेविटी भी उसको वापस से रिटर्न ना कर सके, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, द वेलोसिटी आर नोन एज द एस्केप वेलोसिटी. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी. सेकेंड वन, डज इट डिपेंड्स ऑन मास. क्या ये मास पे डिपेंड करता है? तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर? वी विल स्टार्ट द सिंपल बेसिक फंडामेंटल थ्योरी एंड डेरिवेशन. जैसे हम डेरिवेशन को ड्राइव कर लेंगे, अगर जो उस डेरिवेशन में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें मास आएगा तो अपन बोलेंगे यस इट इज डिपेंड्स ऑन द मास, और अगर जो वहाँ पर मास नहीं आ रहा है दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी डजंट डिपेंड्स ऑन मास. ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द सिंपल definition related to escape velocity. What is the proper definition of the escape velocity? It is least velocity, मतलब वो minimum velocity with which a body must be thrown vertically, okay, so that it just escape the gravitational pull of earth. For example, let us consider, ये मान लीजिए एक अर्थ है, तो ये एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बाय द सरफेस ऑफ अर्थ. बट अगर जो हमने ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ थ्रो करा इन द वर्टिकली डायरेक्शन कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, तो दिस वेलोसिटी आर नोन एज एस्केप वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट, नाउ टाइम टू डिफाइन अ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट मीन्स डेरिवेशन. जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. लेट the mass of earth will be equal of capital M and radius will be equal of capital R. At any time body is at the distance, particular distance कितना है? x from the surface. Okay student,
यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर रहे हैं, कैपिटल आर को इस तरफ शो कर दिया। लेट वी कंसिडर द रेडियस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आर एंड द मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एम एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एक्स, वेयर small m, that means mass of object. First one student, capital M, that means mass of earth. Capital R, that means radius of earth. Small x, that means the distance of object from the center of earth. And small m, what is the meaning of the small m? That means mass of object. Such that by gravitational force, by definition of gravitational force, student, you know that very well, by the Newton's law of gravitation, capital F is directly proportional m1 m2 by r square. Here capital M, that means a mass of earth, small m, that means a mass of object, and distance between them will be equal of small x square. Okay student, first one, what is the meaning of the capital F? क्या होगा capital F? Gravitational force will be equal of G m1 m2 by x square. But by the definition of work done, क्या होता है? By definition of work done, you know that very well. Work done, that means dw, force into displacement. Student, what is the meaning of the dw and what is the meaning of the dx? तो समझते हैं, ठीक है। अगर जो कहीं पर भी टोटल वर्क डन W है तो हम स्मॉल, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x, अगर जो छोटा सा पार्ट लूँगा तो कितना हो जाएगा dx, अगर जो टोटल वर्क डन W है तो स्मॉल कितना हो जाएगा dw. D रिप्रेजेंट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल यूनिट इन द केस ऑफ physics. So dw will be equal of f into dx, such that dw will be equal capital G capital M small m by x square. Now time to define the total work done. My dear student, what is the meaning of total work done? जब भी हम फिजिक्स में टोटल वर्ड का यूज करेंगे, टोटल और नेट, दैट मीन्स टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड. ओके स्टूडेंट, सो हियर इंटीग्रेशन dw विल बी इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन g capital M small m by x square with respect to dx. Here student, here integration with respect to w and here integration with respect to x. तो समझते हैं सर, what is the meaning of the dw? dw that means partial amount of work done, limit in the form of w. So initially limit will be equal of 0 and finally work done will be equal of w. इनिशियली बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहाँ से ला रहे हैं हम, ठीक है, कैपिटल R टू इन्फिनिटी. ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंक रहे हैं, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे जाएगा तभी वो लौट के वापस नहीं आएगा. और लौट के वापस आ गया तो आप उसको एस्केप वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैपिटल R टू इन्फिनिटी. ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ टाइम टू डिफाइन द सिंपल इंटीग्रेशन. अगर जो आप मेरे साथ चलेंगे तो इंटीग्रेशन कैसा लगेगा, सिंपल इंटीग्रेशन dw. स्टूडेंट, इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल ऑफ x, इंटीग्रेशन dy विल बी इक्वल ऑफ y, दैट मीन्स इंटीग्रेशन dw विल बी इक्वल ऑफ w. सो फाइनली as a LHS we getting the capital W, limit 0 to W will be equal
integration dx, that means x inside of integration and another one outside of integration. So finally we taking capital R to infinity and here 1 by x square and dx, but upper limit minus lower limit such that w minus 0 equal to capital G, capital M, small m and x to the power 2 as a positive term as a case of denominator, but in the case of numerator power convert into the form of negative. Okay, you know that very well. X to the power n कितना होता है? Integration x to the power n will be equal of n plus 1 divided by n plus 1. What is the mean of the n? N may be positive or negative number, maybe in the form of the whole number or rational number, कुछ भी हो सकता है. W minus 0 will be equal of W and here capital G, capital M and small m. Integration x to the power 2, that means power plus 1 whole divided by power plus 1 limit capital R to infinity. So W will be equal of GMM and here x to the power minus 1 and again minus 1 limit capital R to infinity. Student, in the case of limit, ठीक है, जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो आप उसको इजी बनाने के लिए आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट ले जा सकते हैं. सो फाइनल रिजल्ट minus GMM and x to the power minus 1. What is the mean of the x to the power minus 1? May be written in the form of x to the power plus 1 limit capital R to infinity. Now second part of the integration, capital W will be equal of minus capital G, capital M, small m and here integration dx. What is the mean of the integration dx? Limit in the form of x. So finally, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे x की प्लेस पे. हाउ टू पुट द लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो x replaced by the infinity and here x replaced by the capital R. So student, you know that very well. 1 by 0 equal to infinity and 1 by infinity equal to 0. In the simple language, 0 and infinity both are reciprocal to each other. That means we can say 1 by infinity will be equal of 0 and 0 minus 1 by r will be equal of minus 1 by r, minus minus will be equal of plus. So capital W equal to capital G, capital M, small m divided by capital R. Equation number 2. ओके स्टूडेंट, फिर से आप देख लीजिए अभी तक जितना आपने करा है. ठीक है, अभी तक हमने जो करा है उससे हमने किसकी वैल्यू निकाली? कैपिटल W. व्हाट इज द मीन ऑफ द W? W दैट मीन्स अ वर्क डन, बट वी नो दैट वेरी वेल. वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट? ठीक है, ऑब्जेक्ट मास विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 1/2 mv square. What is the standard formula of kinetic energy? Will be equal of 1/2 mv square. But here v, that means velocity. Velocity, that means escape velocity and is represented by, it is represented by vc. V that means a velocity, e that means a escape velocity. So it is represented in the form of ve. स्टूडेंट, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अभी हाल हमने बोला है, ये किसने बोला था? सर आइंस्टीन. ओके, इन द चैप्टर नंबर 2, work done stored in the form of kinetic energy, that means LHS are similar. So by use of the equation number 2 and 3, दोनों equation के LHS सेम हैं. So RHS 1/2 m VE square equal to capital G, capital M, small m and capital R.
Student, here small m will be cancelled by small m. So finally we getting the value of VE square equal to 2 times 2 capital G, capital M and capital R and square replaced by root. You know that very well. So final result, escape velocity will be equal of under the root 2 gm by r. But we know that very well. Small g equal to capital G m by r square, such that by cross multiply we getting gm equal to gr square. So value of gm, the value of capital Gm will be equal of small gr square. Now time to put in the formula. So result, gm will be equal of g and capital R and small r. Single r will be cancelled by single r. So finally we getting the last result in the form 2gr. Okay my dear student. Now one more time, first one, what is the demand of the question? Drive an expression for the escape velocity. What is the meaning of the escape velocity? A minimum velocity, a minimum required velocity for the object which pass out from the gravitational field. Let us consider the mass of planet will be equal of capital M and mass of object will be equal of small m, and distance between them will be equal of small x, where capital R that means radius of earth and small m that means mass of object and capital M that means mass of earth. So student, first one, by the definition of universal gravitational law, या मैं बोल सकता हूँ gravitational force will be equal of gmm by x square and work done equal to force into displacement. Now time to putting the value of capital G. So finally we getting dw equal to g mm by x square. Student, here work done, that means a total work done. Total work done, that means taking integration in both sides. So we taking the integration in both sides. Here integration with respect to w and here integration with respect to x. Then how to solve the integration student? Integration dx, that means x वाला अंदर बाकी सब बाहर, x to the power 2 convert into the form of x to the power minus 2. Student, I written in the simple formula. So we getting the x to the power minus 1 divided by minus 1, minus outside, so x to the power minus 1 convert into the form of plus 1. Upper limit minus lower limit. 1 by infinity, अगर जो आप भूल जाए तो मैं लिख देता हूँ 1 by infinity will be equal of 0. Since 1 by infinity will be equal of 0, that means 0 minus anything will be equal of anything, minus minus plus, so work done will be equal of this. But kinetic energy equal to 1 by 2 mv square. Kinetic energy, sorry, work done stored in the form of kinetic energy. अभी हम ये नहीं बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, क्योंकि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है. तो हम चैप्टर नंबर 2 के एप्लीकेशन का यूज करेंगे. वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दोनों के RHS LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे. स्मॉल m विल बी कैंसल बाय द स्मॉल m. सो फाइनली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, बट gm will be equal of gr square. So finally we getting the value of escape velocity. And last result, here capital M is not present, so last result doesn't depends on mass. Are you getting the 110% solution related to this derivation? Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects.